Hello, my dear students. Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में स्पेशली बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के ऊपर। लेट्स सी लाइक व्हाट इज देयर इनटू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एंड उसके बाद उस यूनिट के अगेंस्ट कौन कौन से लैब असाइनमेंट्स अपने सिलेबस में है उसका भी बात इसी डिस्कशन में करने वाले हैं। सो लेट्स सी लाइक व्हाट इज देयर इनटू द सिलेबस। बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं, डरना मना है। हम लोग ईच एंड एवरी टर्म को क्रिस्टल क्लियर करने ही वाले हैं। सो द यूनिट नंबर 5 नेम इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समटाइम्स वील कॉल इट एज OOP or sometimes we'll call it as OOPS. And we know that object-oriented programming paradigm came into the computing world just to simulate real-world scenarios into the programming. So real-world को अगर programming में लाना है, तो we need this most beautiful concept, and the concept is object-oriented programming paradigm. So ये unit आपके OOP के जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स सी लाइक व्हाट इज देयर इनटू द कंटेंट एंड द एंटायर डिस्कशन विल बिगिन विद व्हाई OOP एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। एंड द टू बेसिक एंटिटीज विद इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर वन इज क्लासेस एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्ट्स। एंड देन OOP के कुछ फीचर्स यहाँ पे हम लोगों को थियोरेटिकली डिस्कस करने हैं एंड देन प्रैक्टिकली भी उसको चेक करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं, डरना मना है। सो दिस फीचर्स आर मेथड्स एंड मैसेज पासिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट फीचर एज इनहेरिटेंस। वी ऑल आर इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वी आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो इनहेरिटेंस वहां पे डिस्कशन करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल फॉर्म्स में एक ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर सकता है, सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज कंटेनरशिप, reusability, delegation, data abstraction and encapsulation. इतने सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ऑफ OOP दैट वी नीड टू स्टडी इन वेरी मच डिटेल्स। अभी ये टर्मिनोलॉजी डेफिनेटली आपको डराने वाला है, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू मेक इट मोर एंड मोर सिंपल बिकॉज आई नो दैट we can definitely connect it to ourselves as we are an object, right? So next to that, what we are going to look into matter is how to declare and define what classes as well as objects. And फिर classes and objects को declare define करने के बाद प्रोग्रामिंग में उसके साथ जुड़े हुए all entities को हम लोगों को देखना है one by one. Like how to go on mentioning the methods within the class, how to work with the self argument, how to go on constructing the object with the init method, how to declare and define the class variables and method, then how to destroy the object that we have created, how to maintain the public as well as private members within this. So all those aspects we need to study one by one. And जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, वैसे वैसे आपकी OOP की समझ as well as understanding of this object oriented programming ka basic will be more and more crystal clear, right? Okay, next to that, get and set, delete class attribute, garbage collection, class method and static method, ये सारे का सारा एंटिटीज हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग वन and packed up with so many new terms as well as so many new concepts to learn, right? But believe me that this will be one of the very interesting unit that you will find into your syllabus. So let's see like what are the different assignments that are given into the prescribed set of assignments. And यहाँ पे 10 assignments are dedicated and very well organized. And हर assignment में एक minute detail about object oriented programming paradigm you are going to touch. And please observe this. पहले दो assignment बहुत ही interesting है. Program to access class variables and program to access class members. Right. So each and every, as I said that every assignment is focusing and touching onto one core aspect of OOP. So यहाँ पे पहले असाइनमेंट में क्लास के वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे इसके बारे में हम लोग इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट गोज विद हाउ टू गो ऑन एक्सेसिंग क्लास के मेंबर फंक्शंस, उसके लिए हम लोग असाइनमेंट करेंगे। नेक्स्ट टू दैट हाउ टू गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इनिट मेथड, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
क्लास एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऐसे कुछ वेरिएबल जो क्लास के साथ चलेंगे, ऐसे कुछ वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे, उनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, पाइथन में उसके लिए सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। एंड जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए हाउ वी कैन गो ऑन यूजिंग द डेल मेथड, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट गोज विद प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट वेरिएबल। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई वेरिएबल प्राइवेट है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, एंड समवेयर इज पब्लिक, यू कैन यूज इट इन एंटायर पाइथन वर्ल्ड। तो उसको डिफरेंशिएट करने का पाइथन का सिंटैक्स क्या है, वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट टू दैट, program to call class methods from another method of the same class, and program to add variables to a class at what runtime। ये दोनों भी वेरी इंटरेस्टिंग कोड्स हैं। एंड देन कोड नंबर 9 एंड 10, यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज करेंगे टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। फॉर एग्जांपल, प्लीज ऑब्जर्व, रियल वर्ल्ड एंटिटी कौन सा क्लास क्रिएट करना है, पर्सन, एंड पर्सन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोगों को कुछ रियल लाइफ एंटिटीज के सिनेरियोज को कोड करना है। एज वेल एज नेक्स्ट कोड में यू विल बी एबल टू फाइंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसके कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। सो दिस इज अ वेरी नाइस सेट ऑफ असाइनमेंट्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे व्हाट आई पर्सनली फील्स इज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट रहने वाला है जहाँ पे n number of new terminologies with crystal clear approach we are going to work on. So that's it from my side about introduction of unit number 5 and prescribed lab. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.